हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग फिट एंड फाइन, हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी डिस्कशन स्टार्ट किया था और आपको पता होगा ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी इट इज़ द मोस्ट एडवांस वर्जन ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। कल हमने दो तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी एक्सप्लेन की थी, डिस्कस की थी, और वो है विथ sp मिक्सिंग एंड विदाउट sp मिक्सिंग। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, बोरोन टू कार्बन टू नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन टू फ्लोरीन टू नियोन, एस ऑर्बिटल हमेशा भरी रहती है और पी ऑर्बिटल में एक एक करके इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाते हैं। तो पी ऑर्बिटल में जब पैरिंग स्टार्ट होती है ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन के केसेस में, तो वहां पर रिपल्जन बहुत बढ़ जाता है। रिपल्जन बहुत बढ़ जाता है तो एस और पी के बीच में एनर्जी का डिफरेंस हाई रहता है, तो उसमें से बनने वाली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बीच में भी एनर्जी डिफरेंस हाई रहता है। तो उस केसेस में sp मिक्सिंग नहीं हो पाती है। sp मिक्सिंग नहीं हो पाती है तो सिग्मा बॉन्डिंग टू पी जेड की एनर्जी लेवल लो रहती है एंड पाई बॉन्डिंग टू पी एक्स, पाई बॉन्डिंग टू पी वाई की एनर्जी लेवल हाई रहती है। जबकि बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन के केसेस में जब भी आप देखेंगे तो S और P के बीच में एनर्जी का डिफरेंस लेस है, तो उसमें से बनने वाली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच में भी एनर्जी लेवल डिफरेंस लेस होगा। तो वहां पर sp मिक्सिंग अमॉन्ग्स द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी पॉसिबल हो पाएगा। तो सिग्मा स्टार टू s एंड सिग्मा स्टार टू पी जेड के बीच में फिर से लीनियर कॉम्बिनेशन होगा और नई ऑर्बिटल का निर्माण होगा। तो सिग्मा स्टार टू एस की एनर्जी आइडियली जितनी होती है उससे थोड़ी नीचे जाएगी, लेकिन फिर भी 2s एटॉमिक ऑर्बिटल से वो ऊपर रहेगी। सिग्मा स्टार टू पी जेड की एनर्जी जहां है वहां से ऊपर जाएगी। यहां तक कोई चेंज नहीं होता है स्टूडेंट्स। अब आगे जाके जब सिग्मा बॉन्डिंग 2s एंड सिग्मा बॉन्डिंग 2pz इनके बीच में भी जब एनर्जी लेवल लेस है, उनके बीच में लीनियर कॉम्बिनेशन होकर के फिर से नई दो ऑर्बिटल बनती है, जहां पर सिग्मा बॉन्डिंग 2s जो है उसकी एनर्जी जहां है वहां से थोड़ी नीचे जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड दूसरी बात, सिग्मा बॉन्डिंग 2pz की एनर्जी जहां है वहां से थोड़ी ऊपर जाएगी, यहां फर्क पड़ता है। सिग्मा बॉन्डिंग 2pz की एनर्जी इंक्रीज होकर के, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इंक्रीज होकर के कहां पहुंच जाती है, पाई बॉन्डिंग 2px, पाई बॉन्डिंग 2py से भी ऊपर चली जाती है और यहां पर चेंज हो जाता है। तो ध्यान रखना, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड उसकी डेरिवेटिव्स जो होती है इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनके लिए पाई बॉन्डिंग 2px, पाई बॉन्डिंग 2py का लेवल नीचे होता है एंड सिग्मा बॉन्डिंग 2pz का लेवल कहाँ होता है स्टूडेंट्स? ऊपर होता है। और ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन इररिस्पेक्टिव ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसकी डेरिवेटिव्स में सिग्मा बॉन्डिंग 2pz का लेवल नीचे होता है और पाई बॉन्डिंग 2px, पाई बॉन्डिंग 2py का लेवल ऊपर होता है। तो कल हमने दो एग्जांपल्स लिए थे, वो थे H2 एंड He2। उनके लिए हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम डिस्कस किया था। अब दो तरह से ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनती है, विथ sp मिक्सिंग एंड विदाउट sp मिक्सिंग। ठीक है, तो विथ sp मिक्सिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? विथ sp मिक्सिंग ऑफ कोर्स हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम, यहां पर तो sp मिक्सिंग पॉसिबल ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास p ऑर्बिटल ही नहीं है, तो उनका भी उसका भी समावेश आप कर सकते हैं कि उसमें sp मिक्सिंग नहीं होता है। ठीक है, तो जिसमें sp मिक्सिंग होता है वहां पर क्या होगा? सिग्मा बॉन्डिंग 1s, फिर ऑर्डर आएगा सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा बॉन्डिंग 2s, सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद क्या आएगा? पाई बॉन्डिंग 2px इक्विवेलेंट, पाई बॉन्डिंग 2py, फिर आएगा सिग्मा बॉन्डिंग 2pz, फिर आएगा पाई स्टार 2px इक्विवेलेंट, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। This is the order when sp mixing does not takes place and without sp mixing अगर होगा तो सारी चीजें सेम रहेगी। यहाँ पर ये ऑर्डर चेंज हो जाता है, आपको पता है,
and that is sigma bonding 1s, sigma star 1s, sigma bonding 2s, sigma star 2s, sigma bonding 2pz, pi bonding 2px, pi bonding 2py, pi star 2px, pi star 2py and sigma star 2pz। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां तक हमने देख लिया था। इसमें कौन आ सकता है? इसमें आ सकता है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड डेरिवेटिव्स। और यहां पर ऑफ कोर्स यहां तक की अगर आप बात करें, यहां तक की ही अगर आप बात करें तो इसमें तो डेफिनेटली हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम सब आ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल यहां अगर आप बात करें तो ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन एंड डेरिवेटिव्स। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आज की क्लास शुरू करने से पहले एज यूजुअल हम 10 सेकेंड्स का कंसंट्रेशन सेशन करेंगे एंड देन वी विल कंटिन्यू आवर क्लास विद लॉट मेनी एग्जांपल्स। और अब हम जितने भी एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे उन सभी एग्जांपल्स में वो पूरी जो हमने डायग्राम बनाई थी वो डायग्राम हम नहीं बनाएंगे स्टूडेंट्स। हम क्या करेंगे, सीधा इसका ही यूज करेंगे स्टूडेंट्स, सीधा इसका यूज करके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। ठीक है, चलिए 10 सेकंड कंसंट्रेशन स्टार्ट करते हैं। Okay, so both of us are totally connected with each other. Our energy and frequency have been synchronized. So whatever I'll deliver from here, that will enter to your brain, to your deep cell level even. So that will help you out to increase your score and confidence both. Let me know if we can start our session. Our first example for the day is H2 plus. Okay, H2 plus. So H2 plus, which order will be involved? Which order will be involved? Even if you use with sp mixing or sp without mixing, in any case up to sigma star 1s remains the same. Now you focus on to these, how many electrons will be there? If it is H2, one hydrogen has 1 electron, 2 hydrogen has 2 electrons, and if it is a plus, so 2 minus 1 total, how many electrons you will have to show? Only 1 electron you will have to show, and you know the order as per above Pauli and Hund's principle. We are filling these molecular orbitals also. Total only 1 electron you will have to fill, and that is going to be what? Its electron configuration will be sigma bonding 1s1. Check it. Now if you want to show the bond order is what? Bond order is half NB minus NA, and that is half 1 minus 0. B has 1 electron and there is no electron in star, so that is going to be 1 by 2, and there is 0.5 bond order, right? And magnetic property. Magnetic property will be what? Definitely it is going to be paramagnetic. Paramagnetic property. See carefully. Paramagnetic property. Why? Because one unpaired electron is present, so it is paramagnetic in nature. It has been clear to you students? Let me know. If it is clear, please mention. Clear? So I think this is our third example. Now I am taking fourth example, and that is H2 minus. H2 minus.
So in H2 there are 2 electrons, while in H2 minus total 3 electrons will be there. So if you want to show its electron configuration, sigma bonding 1s2 and then sigma star 1s1. Comfortable with this? See, it has become very much simple. I have made it very simple for you. Yesterday when I introduced the molecular orbital theory, it could have been a little difficult to accept the theory. Why? Because it's a new concept. This happens for the very first day, be it a resonance or a dipole or anything, or even a hybridization. Very first day what we discussed, that is the concept I will deliver, that you will accept, you will remember, and very next day or maybe after, in the second half of the class, definitely when we start its application, it starts sinking to your brain even more correctly. Definitely you can get more confidence also, right? So now in this case, bond order. So that is half NB minus NA, that is half. NB is 2 and NA is 1. A means what? Antibonding. So this is going to be half into 1. So that is 0.5. So again in this also bond order is 0.5. And in this case magnetic property. What you suggest about magnetic property? Check the magnetic property. Magnetic property is what? This is completely filled, but this has 1 electron, so this is going to be what? This is going to be paramagnetic. Is it clear? Good. Now it is asked that compare relative stability of H2, H2 plus and H2 minus. Now there is a fact that more the bond order, more the stability. This I explained you earlier also, that in case of N2, O2 and F2, the stability order is this. Why? Because it has a triple bond, double bond and a single bond. Now you look at here, H2, H2 plus and H2 minus. This has bond order 1, this has 0.5 and this also has 0.5. So these has higher bond order as compared to this. So that is very pretty clear that most stable is going to be H2, right? Now how you can compare these two? Why? Because both have same bond order. Now whenever you have same bond order, what you will focus, that the one which has less number of electron in anti-bonding will be more stable. Why? Because you focus on to this. What is the nature of this star? Star is what? Star is anti-bonding. Anti-bonding means what? Oppose of electron. Sorry, oppose of bond. So if there is an oppose of bond, that bond will be, this existing bond will be what? Less stable. Why? Because there is someone to oppose the bond. While if you come to this, check it. In this also bond order is 0.5, but in sigma star 1s orbital there is nothing. Means what? There is nobody to oppose the existing bond. While in case of this, what happens? In case of this, there is one electron present in anti-bonding orbital which actually opposes the bond formation or bond already existing. Means what? This H2 minus will be less stable as compared to H2 plus, though both have bond order 0.5. So whenever you have same bond order, what you will focus is where there is no electron in anti-bonding or where there is less number of electrons in anti-bonding, that species will be more stable. Okay, so H2, then H2 plus, and the least stable is H2 minus. So here we will add one more point, less number of electrons in ABMO, more
the stability. If you have got these, let me know in the chat box. Of course, these. Is it fine? And everyone clear with this? I have given a short trick to you how you will remember it. Okay? Now He2 plus. He2 plus. So altogether He2 has 4 electrons and He2 plus means what? You will have to remove 1 electron. So in He2 plus you will fill 3 electrons. So it is going to be sigma bonding 1s2 and sigma star 1s1. Now bond order. Half Nb minus Na, that is half, 2 minus 1, that is half, into 1.5. And magnetic property. It is what? It has 1 unpaired electron, so it is paramagnetic in nature. Now we look at here, if it is asked that which of these two will be stable, let me know. He2 is stable or He2 plus is stable. That is very clear that this has bond order 0 and this has bond order 0.5. This has 0 bond order, that itself indicates that this is not possible even. Even this has 0.5 bond order, actually it has a positive value. Means what? This does not exist. Does not exist. But you can say that these exist. And if it exists, definitely its stability is more. I hope you can understand the concept. Now we have Li2. I don't know which number it is. Li2 total how many electrons? 6 electrons are there. Then sigma bonding 1s2, sigma star 1s2, and then 2 more electrons. So now it will come in sigma bonding 2s2. It's fine. Now next is bond order. Bond order. And how we will show? Half Nb minus Na, that is half. Now you will check B and B. Total B bonding electrons are 4 and anti-bonding electrons are 2. So it is going to be half into 2 equals to 1. So in Li2 molecule there is a single bond between 2 Li atoms. And magnetic property. Magnetic property. Obviously it is diamagnetic in nature. I hope everyone is comfortable with this. Li2 plus. So in this total 6 electrons minus 1, total 5 electrons, you will have to fill sigma bonding 1s2, sigma star 1s2, sigma bonding 2s1, 2 plus 2 plus 1, 5. Now we will go for bond order, that is half Nb minus Na, that is half. 2 plus 1, 3 minus 2 is equals to 1 by 2 into 1, that is 0.5. Now, magnetic property.
magnetic property, and that is what? That is going to be paramagnetic in nature. Why? Because it has one unpaired electron present over here. Okay, so now Li2 minus, so in this case total 6 plus 1 7 electrons we have to fill, and that is sigma bonding 1s2, sigma star 1s2, sigma bonding 2s2, total 6 electrons, still one more is needed. It goes like, sorry, it goes like this. Now bond order is half NB minus NA, that is half 4 and 2 plus 1 3. So this is what? Half into 1, and bond order is 0.5. And magnetic property, if I say magnetic property, you can see in sigma star 2s, one unpaired electron is there, it should be 2s, and one unpaired electron is there, so it is paramagnetic in nature. Now relative stability of Li2 plus and Li2 minus. So let's see, Li2 has bond order 1, Li2 plus has bond order 0.5, and Li2 minus has also bond order 0.5. So most stable is Li2. Now you can see over here in Li2 plus there is one electron in this and no electron in sigma star. You can check it, no electron in sigma star, while that in Li2 minus one electron is there in sigma star. If electron is present in anti-bonding molecular orbital, it will make it unstable. So Li2, and after that Li2 plus, and least stable is Li2 minus. By now I think you have gained the confidence that how this can be solved. Okay, let me know in the chat box if you are comfortable. Confident now? Okay, let's move on. Total 8 electrons we are going to show. Sigma bonding 1s2, sigma star 1s2, sigma bonding 2s2, and sigma star 2s2. Now what about bond order? What about bond order? That is half NB minus NA, that is half. You can check bonding 4, anti-bonding 4, so 4 minus 4 equals to 0. So I mentioned that Be2 molecule does not exist, and if any molecule or any species does not exist, we should not discuss its magnetic property. So these were some examples starting from hydrogen, helium, lithium and beryllium. See, in these no p orbital is there, so there was no point of discussion even about sp mixing, right? Now we will focus on to what? Focus on to the next example, and that example is, was it 9? Next example is B2. Now B2 has sp mixing, and if it is sp mixing, pi will come first and sigma will come later. Okay, so sigma, total 10 electrons we have to fill. Sigma bonding 1s2, sigma star 1s2, sigma bonding 2s2, and sigma star 2s2. Till here there should be no issue to any of you. So total 8 electrons I have filled. Now in this sigma sp mixing is there, so pi bonding to px equivalent pi bonding to py. Remember student, you will have to take care that whenever there is pi,
be it pi bonding or be it pi star, you will show both together. Why? Because they have same energy, and if they have same energy, definitely you will use the Hund's rule. In equi-energetic orbitals are filled first unpaired and then its pairing star. And even if you have to show the spin of that electrons, definitely those electrons will have identical spin, parallel spin. Okay, now total 8 electrons you have shown. So 9th electron will come here and 10th electron will come here. So it will be like this. So total 10 electrons, 2 plus 2 plus 2 plus 2 and 1 and 1. Why I have shown like this? Because these are equi-energetic orbital. 1 electron, 9th electron will come here and 10th electron will come here. Okay, so this is overall electron configuration of B2. Now bond order. Bond order is what? Bond order is 2 plus 2, 1 and 1. So total half NB minus NA equals to half. Total how many electrons? 6 electrons minus 2, that is 4, that is half 2 and total 1. Now very important thing that in B2 molecule a single bond is present. A single bond is present. Now very unique thing you are going to come across in this case, that you see the bond electrons present are where? This bonding these and these will cancel off, and these and these cancels off, these and these cancels off. So bonding electrons are present in pi molecular orbital. Take care, pi molecular orbital. So in B2, according to molecular orbital theory, the single bond which is present is actually a pi bond. So generally we know that whenever two atoms join with each other, first bond that is formed is always a sigma bond, and the second next bond that is formed is a pi bond. But according to molecular orbital theory, the bonding electrons are present in pi molecular orbital, and due to that you can say that these is actually a single bond and which is a pi bond, and that is something really amazing thing, and you should also be thrilled and surprised, and you actually should have gained the knowledge, something extraordinary up till now you are knowing, and that will increase your confidence, even that whenever it will be asked in the exam you will definitely make it correct. Let me know in the chat box. चैट बॉक्स में शेयर करें स्टूडेंट्स. One unpaired electrons are present in pi bonding 2px and pi bonding 2py molecular orbitals, so definitely it is paramagnetic in nature. अब हमने जो B2 का एग्जांपल लिया है, that is with sp mixing. Now the twist question can be asked like this: B2 without sp mixing. B2 without sp mixing. And if there is no sp mixing, what happens? Sigma bonding to pz energy will be lower. Sigma bonding to pz energy will be lower. So total 10 electrons I have to show. I will show it like sigma bonding 1s2, sigma star 1s2,
sigma bonding 2s2, sigma star 2s2, and total 8 electrons done without sp mixing. Take care, now it will come sigma bonding 2pz and both electrons will come over here. Now bond order, and that is half Nb minus Na, half 2 plus 2 plus 2, total 6 minus 4 equals to 1 into 2 equals to 1. So in B2 molecule there is a single bond and it is sigma bond. Why it is sigma bond? Because bonding electrons are present in this sigma orbital. Check it. And the interesting thing, magnetic property. Check it, students. Magnetic property. Magnetic property is what? Magnetic property is what? Check it. Magnetic property is diamagnetic in nature. तो देखो स्टूडेंट्स, एक्चुअली उसमें sp मिक्सिंग होती है और प्रैक्टिकली B2 का नेचर होता है पैरामैग्नेटिक. वो इंडिकेट करता है कि B2 में sp मिक्सिंग होती है. लेकिन क्वेश्चन तो क्या है, एग्जामिनर क्वेश्चन किसी भी तरह बना सकता है. तो आपको पूछ ले कि व्हाट इज द डिफरेंस इन नेचर ऑफ बॉन्ड एंड बॉन्ड ऑर्डर. सो देयर इज नो चेंज इन बॉन्ड ऑर्डर. अगर sp मिक्सिंग होगी, sp मिक्सिंग नहीं होगी तो भी बॉन्ड ऑर्डर 1 ही होगा. But if there is a sp mixing, the nature of bond is pi. But if there is no sp mixing, nature of bond is sigma. I hope you like this discussion. Let me know. And of course, magnetic property also changes. Without sp mixing, the magnetic property is diamagnetic, which is not correct. Actual nature of B2 is paramagnetic. So with sp mixing, it is paramagnetic, which is practically true. But without sp mixing, it is asked to deduce the structure and the bonding. Then you can say that without sp mixing, B2 is what? B2 is diamagnetic in nature. Now let's come on to very interesting example of C2. If nothing is mentioned, see, I am telling you to describe the molecule of C2. What you will do? If nothing is mentioned, what is ideal you will do? That if C2 is there, carbon is there, in that sp mixing takes place. Whatever happens in sp mixing, you will explain. It's fine. So if nothing is mentioned, what is ideal that you will do? It's fine. Okay. So now it is what? Sigma bonding 1s2, sigma star 1s2, sigma bonding 2s2, sigma star 2s2. So total 8 electrons. sp mixing takes place, so pi will come lower. So now pi bonding to px, equivalent pi bonding to py. Now total 10 electrons you will, 12 electrons you will have to fill. So 9, 10, 11, 12. I hope you understand. 9, 10, 11, 12. So both will have 2 electrons. Now bond order. That is half Nb minus Na. 2 plus 2 plus 2 plus 2, that is half. 8 minus 4 equals to half into 2, half into 4, that is equals to 2. So in C2 molecule there is a double bond, and most amazing statement is coming over here, and both bonds are pi bonds. Interesting. Why? Because bonding electron pairs are present here. Check it, in pi molecular orbital. That is something amazing. So if I show C double bond C,
So ideally what we show that this is sigma and one is pi. No, both are pi. Magnetic property. So all the electrons present are paired, so it is diamagnetic in nature. C2 without sp mixing. So total 12 electrons I have to show. Sigma bonding 1s2, sigma star 1s2, sigma bonding 2s2, sigma star 2s2. Now sp mixing does not take place, means what? Sigma bonding to pz will be lower, so it will be sigma bonding to pz2. Total how many electrons happen? 2 plus 2 plus 2 plus 2, 12 electrons I have to fill. 10 electrons are still there. After that, pi bonding to px, equivalent pi bonding to py. Still 2 more electrons I have to fill. Then what happens, you know? Now Hund's rule will be there. 2 more electrons, so 1 here and 1 here. So it will be going like this. Now what happens in bond order? Nothing will happen in bond order, students. Bond order is going to remain the same. Half NB minus NA. Check it. So 2 plus 2 plus 2 plus 1 plus 1. So it is going to be half 8 minus 4. Half into 4 equals to 2. So in C2 molecule, there is a double bond in which one is sigma and one is pi. How can you say that? These will cancel out each other. 2 electrons in this and 2 electrons in this. So this is sigma and this is pi. Check it. Of course, both pi are correct, because in C2 sp mixing does take place. Now one very important thing comes over here, that magnetic property. Magnetic property is what? This shows that pi bonding to px and pi bonding to py has 1 unpaired electron each, so it is paramagnetic in nature. And practically it has been proved that C2 is not paramagnetic, C2 is actually diamagnetic in nature. That suggests that C2 has not these electron configuration, the previous one, and in that previous one bonding electrons are present in pi molecular orbital, and this proves that both the bonds are pi. N2. Of course, in N2 sp mixing does take place, and due to that we will show that pi bonding electrons are lower and sigma bonding has higher energy. So sigma bonding 1s2, sigma star 1s2, sigma bonding 2s2, sigma star 2s2, pi bonding to px,
equivalent pi bonding to py. So total 2 plus 2 plus 2 plus 2, 8 electrons are there, 9, 10, 11, 12. So 2 electrons, and after that sigma bonding to pz has 2 more electrons. This is how 14 electrons are done. Now bond order. Half Nb minus Na, half 10 minus 4, half 6 equals to 3. So in N2 molecule there is a triple bond. There is a triple bond in which one is sigma and 2 are pi. Magnetic property. Magnetic property. All the electrons are paired, so it is diamagnetic in nature. N2 without sp mixing. Now without sp mixing क्या होता है स्टूडेंट्स? सिग्मा बॉन्डिंग टू pz energy will come down, so it will be filled first, and after that pi bonding to px and pi bonding to py will be filled. 2 electrons in this and 2 electrons in this. Check it. So now bond order. Half Nb minus Na, that is half 10 minus 6, sorry 10 minus 4, so half 6 equals to 3. So in N2 molecule there is a triple bond in which one is sigma and 2 are pi. I hope you find it interesting. Diamagnetic.
ये टेबल बना लेते हैं स्टूडेंट्स। चलो आप ये टेबल कंप्लीट करो। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर में कोई चेंज नहीं होता है, विथ विदाउट कुछ नहीं होता। इसमें 1 रहेगा, इसमें 1, ये 2, ये 2, ये 3, ये 3। लेकिन नेचर ऑफ बॉन्ड बदल जाता है। यहां पर क्या रहता है, इट बिकम्स पाई, यहां पर ये बन जाता है सिग्मा, यहां पर क्या होता है बोथ पाई, जबकि यहां पर 1 सिग्मा 1 पाई, यहां पर 1 सिग्मा 2 पाई, यहां पर 1 सिग्मा 2 पाई। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखिए स्टूडेंट्स, ये होता है पैरा, लेकिन अगर विदाउट देखे तो ये हो जाता है डायरा। चेक करो, ये हो जाता है डाया, और अगर विदाउट देखे तो ये हो जाता है पैरा। अब ये है डाया और ये है डाया। चलिए, अब मजे की बात ये है, सबसे इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों ने नोटिस की हो और अगर नहीं की हो तो कर लो, और वो ये है, चेक करो कि नाइट्रोजन एक ऐसा केस है जिसमें एसपी मिक्सिंग हो ना हो, बॉन्ड ऑर्डर में, नेचर ऑफ बॉन्ड में और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो ये पूरा टेबल नोट कर लो। क्लियर? N2 plus. Now you should not ask me that what to do, sir, with this N2 plus. What is N2? That in nitrogen sp mixing takes place, so in all the derivatives of nitrogen sp mixing will take place. Okay, so in that case pi will come first and sigma will come later. Now in this case 14 plus charge indicates that 1 electron is lost, so total 13 electrons you will show. So it is going to be what? It is going to be sigma bonding 1s2, sigma star 1s2, sigma bonding 2s2, sigma star 2s2, pi bonding to px2, pi bonding to py2, and sigma bonding to pz1. Half NB minus NA, that is half 9 minus 4 equals to half into 5, and the bond order is 2.5. For non-integer value of bond order, for non-integer value of bond order, nature of bond is not explained. Okay, one unpaired electron is present, so it is going to be paramagnetic in nature.
So in this you will have to fill what? N2 minus. So in this total 14 electrons plus 1 electron, so total 15 electrons are there. Let me tell you, अगर आपने वो 14 up to 14 electrons and more than 14 electrons वाला कंसेप्ट जो बहुत सारे टीचर्स और कॉर्पोरेट पढ़ाते हैं ये याद रखा तो गलती होगी. इसमें 15 इलेक्ट्रॉन्स है, बट दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ नाइट्रोजन एंड एज इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ नाइट्रोजन sp मिक्सिंग विल टेक प्लेस, दैट इज फॉर श्योर. इट्स फाइन. ओके, ऑफ कोर्स यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना. बॉन्ड ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अगर आप sp मिक्सिंग करें ना करें, क्योंकि n2 में भी नहीं पड़ा है तो n2 माइनस में भी नहीं पड़ेगा. लेकिन वो आपको अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पूछ ले तो गलती हो जाएगी. क्यों? क्योंकि अगर आपने N2 माइनस माने 15 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, 15 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए और आपने सिग्मा बॉन्डिंग टू pz फिर पहले लिख ली तो फिर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन गलत हो जाएगी आपकी. ओके, चलो. सिग्मा बॉन्डिंग 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा बॉन्डिंग 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई बॉन्डिंग 2px पहले आएगी, पाई बॉन्डिंग 2py साथ में ही आएगी, फिर आएगी सिग्मा बॉन्डिंग 2pz2. अब मुझे एक और इलेक्ट्रॉन डालना है. सिग्मा बॉन्डिंग के बाद आएगी पाई स्टार 2px इक्विवेलेंट पाई स्टार 2py. ध्यान रखना स्टूडेंट्स, दो में से किसी एक में ही इलेक्ट्रॉन दिखाना है, लेकिन लिखनी दोनों ही पड़ती है, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो या तो आप इसमें इलेक्ट्रॉन डालें या इसमें इलेक्ट्रॉन डालें, दोनों में से कहीं पर भी आप इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं. ऑफकोर्स यहाँ 1 तो यहाँ पर 0 लिख ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा. चलो, बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? Bond order will be half Nb minus Na, that is half 10 minus 5 होगा. स्टार में देखो 2 plus 2 plus एक इलेक्ट्रॉन है, so that is half into 5 equals to 2.5. नेचर क्या होगा बताओ? मैग्नेटिक नेचर क्या होगा? मैग्नेटिक नेचर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी? There is one unpaired electron present in pi star orbital, so it is paramagnetic in nature. Check it. अगर रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करें, रिलेटिव स्टेबिलिटी तो हाईएस्ट स्टेबल होगा N2, then N2 plus and then N2 माइनस. ये दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में है तो डेफिनेटली N2 माइनस की स्टेबिलिटी लेस होगी. Now I am going to take N2 minus 2. N2 minus 2. So total 16 electrons we have to fill. Now again इसमें भी ध्यान रखना कि नाइट्रोजन की डेरिवेटिव है. Don't go on number of electrons. ये नाइट्रोजन की डेरिवेटिव है तो you will use chart or the sequence or the energy order of nitrogen with sp mixing. So sigma bonding 1s2 sigma star 1s2 sigma bonding 2s2 sigma star 2s2 sigma bonding pi bonding to px pi bonding to py 2 and 2, then sigma bonding to pz2,
then pi star 2px equivalent pi star 2py. Total 16 electrons. Up till there 14 electrons are there. 2 more electrons we have to show, first here and second here. Why? Because we have to obey Hund's rule. Okay. Bond order. Bond order will be what? Half NB minus NA, half, that is 10 minus 6 equals to half into 4 equals to 2. And magnetic property, it is paramagnetic. So this is also paramagnetic and previous was also paramagnetic. Now if you want to compare the paramagnetic property, this will be more paramagnetic. Why? Because this has 2 unpaired electrons while N2 minus has only 1 unpaired electron. So the one which has more unpaired electron, I think you know, magnetic moment is under root n into n plus 2 Bn. So n is what? Number of unpaired electrons. So more the number of unpaired electrons, more will be the magnetic moment. It's fine. Okay. Now if you want to compare the relative stability, N2 minus 2, N2 plus and N2 minus. Why so? Because it has a bond order 3. Sorry, I have done wrong. N2 plus, N2 minus, and then N2 minus 2. Why? Because this has bond order 3, this has bond order 2.5, and this has bond order 2. Now one of your most awaited example, and that is oxygen. अगर आपको याद हो तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी जो है हमने स्टार्ट ही O2 के एग्जांपल से की थी, याद करो। वैलेंस बॉन्ड थियरी के हिसाब से हमने बताया था कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या होता है, डायमैग्नेटिक होता है। फॉर दैट मैटर वैलेंस बॉन्ड थियरी के हिसाब से सारे मॉलिक्यूल्स डायमैग्नेटिक ही होते हैं। क्यों? क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थियरी ये बताती है कि कंबाइन होने वाले एटम्स की हाफ फिल्ड ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती है। अब जहां पर ओवरलैप होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग हो जाता है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग होगा माने इलेक्ट्रॉन पेयर बन जाएगी। और अभी सभी मॉलिक्यूल्स में अगर इलेक्ट्रॉन पेयर ही होगी तो सभी मॉलिक्यूल्स डायमैग्नेटिक ही होंगे। तो सेम वे O2 भी डायमैग्नेटिक होता है अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थियरी। लेकिन प्रैक्टिकली ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या है? प्रैक्टिकली ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी ये जस्टिफाई कर पाती है कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है? तो चेक करते हैं। दूसरी बात, यहां पर अगर आपको पता है कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन के डेरिवेटिव्स में sp मिक्सिंग नहीं होता है। अगर नहीं भी होता है तो बॉन्ड ऑर्डर, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी या डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालने में कोई गड़बड़ नहीं, कोई आपका आंसर गलत नहीं आएगा अगर आपने sp मिक्सिंग किया या नहीं किया। क्यों? क्योंकि अब सब कुछ जो चेंज होगा वो एंटी बॉन्डिंग में होगा। समझ रहे आप? जितना भी चेंज होगा, अब जो होगा इलेक्ट्रॉन फिलिंग का चेंज जब होगा वो सारा एंटी बॉन्डिंग में होने वाला है, नीचे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए बॉन्ड ऑर्डर में कोई चेंज नहीं होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होगा। अगर आपने sp मिक्सिंग के बदले विदाउट sp मिक्सिंग करना है, विद sp मिक्सिंग भी कर दिया तो कोई चेंज नहीं होगा, कोई गलती नहीं होगी। लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पूछ ली तो आपने sp विदाउट मिक्सिंग के बदले sp विथ मिक्सिंग कर दिया तो पाई और सिग्मा का ऑर्डर चेंज हो जाएगा, एंड दैट विल बी रॉन्ग फॉर यू। सो टेक केयर। ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, उसकी डेरिवेटिव्स में हमें sp मिक्सिंग नहीं करना है। तो क्या होगा? सिग्मा बॉन्डिंग टू pz की एनर्जी लोअर होगी, पाई बॉन्डिंग टू px, पाई बॉन्डिंग टू py की एनर्जी बाद में आएगी। ओके, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स हमें भरने हैं। लेट्स स्टार्ट।
अब देखो स्टूडेंट्स, ब्यूटी यहाँ पर ये है कि इसमें O2 में 16 इलेक्ट्रॉन्स है और इसकी प्रीवियस थियरी N2-2 में भी 16 इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ पर ध्यान से देखें स्टूडेंट्स तो कि यहाँ से यहाँ तक में कोई चेंज नहीं है, दोनों में सेम होगा। लेकिन ये 16 इलेक्ट्रॉन्स विथ नाइट्रोजन डेरिवेटिव है, तो पहले पाई आएगा फिर सिग्मा आएगा। जबकि यहाँ देखो ये ऑक्सीजन है, इसमें भी यहाँ तक कोई चेंज नहीं है, चेक करो। लेकिन ये ऑक्सीजन है तो पहले सिग्मा आएगा, क्योंकि इसमें sp मिक्सिंग नहीं होती है, उसके बाद पाई आएगा। बाकी ये जो है यहाँ देखे और ये जो है यहाँ देखे, इसमें कोई चेंज नहीं है, दोनों में सेम है। तो दिस इज आई वांट टू एम्फेसाइज कि अगर आप, ऑफ कोर्स इसमें भी क्या आ रहा है देख लो, इसमें भी बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, चेक करो। वो पैरामैग्नेटिक आ रहा है, चेक करो। और ऑक्सीजन इटसेल्फ में भी बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और वो भी पैरामैग्नेटिक आ रहा है। बॉन्ड ऑर्डर में कोई चेंज नहीं होगा, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक नेचर में भी कोई चेंज नहीं होगा। चेंज कहां होगा, चेंज उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए now I am taking O2 plus O2 plus O2 प्लस में 16 माइनस 1 टोटल 15 इलेक्ट्रॉन्स आपको भरने हैं और ऑक्सीजन की डेरिवेटिव है, ध्यान रखना sp मिक्सिंग नहीं करना है। This much clear? Now still I have to add total 14 electrons, then 1 electron I have to fill, and I have explained you कि जब भी आप पाई ऑर्बिटल लिखे तो आपको दोनों लिखनी है, दोनों की एनर्जी सेम होनी है। तो दो में से किसी भी एक में आप शो कर सकते हैं, तो यहाँ 1 और यहाँ 0, या तो यहाँ 1 यहाँ 0। ओके चलो, बॉन्ड ऑर्डर ये हो जाएगा हाफ Nb माइनस Na, दैट इज हाफ 10 माइनस 5, is it 5? Yes, 5. So that is half 5 and that is 2.5. Magnetic property. Magnetic property is paramagnetic in nature, but this will be less paramagnetic than oxygen itself. Why? Because it has what? It has one unpaired electron, while oxygen has two unpaired electrons. O2 plus 2. O2 plus 2. O2 plus 2 is having total 14 electrons. अब यहाँ फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला कंसेप्ट ना समझे, ना पकड़े। इनफैक्ट O2 plus 2 में भले ही 14 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन आपको sp मिक्सिंग नहीं कराना है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन की डेरिवेटिव है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो सिग्मा बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा स्टार 1s2। Now we have written this for so many times, तो मैं ये समझता हूँ कि ये सीक्वेंस याद रखने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
all the electrons are paired, so it is diamagnetic in nature. This is called superoxide ion. Total 16 plus 1, 17 electrons we have to fill. Now till here there are 14 electrons. After that it will come pi star to px equivalent pi star to py. Still 3 more electrons to be filled. Till here 14. 3 more. So 1 and 1 come over here. So 2 electrons are there. Still 1 more electron to be filled. तो किसी भी एक ऑर्बिटल से आप पैरिंग स्टार्ट कर सकते हैं. अब इसमें 2 इसमें 1 दिखा सकते हैं, या इसमें 2 इसमें 1 दिखा सकते हैं. ठीक है, चलो मैं यहाँ पर 2 दिखा देता हूँ. Paramagnetic, or these will also be less paramagnetic as compared to oxygen. Why? Because in this also 1 unpaired electron is there, while in case of oxygen itself 2 unpaired electrons are present, 1 unpaired electron each in pi star to px and pi star to py. Total 16 plus 2, 18 electrons I have to show.
So highest table will be what? O2 plus 2. Then O2 plus, then O2, then O2 minus, and then O2 minus 2. Is it correct, student? You got the same? Let me know. Now F2. So F2 is total 18 electrons you will have to fill, and fluorine again no sp mixing will take place. Of course, there is a single bond. Diamagnetic in nature. So F2 is same as O2 minus 2, is it? F2 is same as O2 minus 2. O2 minus 2, check it. Now we are taking Ne2. Total 20 electrons.
So any two molecule does not exist, and we know that. And with the help of molecular orbital theory, we have proved that also that O2 molecule has a double bond. Not only that, it is paramagnetic in nature. So I hope you can understand the superiority of molecular orbital theory over valence bond theory, VSEPR theory, and even Lewis dot structure as well. So it was really interesting. Now आपको क्वेश्चंस जो पूछते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस जो पूछते हैं वो क्वेश्चन जनरली दो तरह से पूछते हैं। एक तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर का, आपको कोई भी स्पीसीज दे दे और आपको पूछ ले कि भाई इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ, और आपको पूछ लेते हैं कि भाई इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी। अगर आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पूछ ले तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता, आपको पूरा उसको लिखना ही पड़ेगा, दैट इज फॉर श्योर। आपको क्या करना पड़ेगा, कंपल्सरी लिखना पड़ेगा, दैट इज फॉर श्योर। तो आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में लेकर के चल रहा हूं 10 से, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर मैं जो लिख रहा हूं उसको बहुत ध्यान से देख ले। ये आपको मैं एक शॉर्टकट दे रहा हूं, ये समझ के चले। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 है तो आपका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3। अब इससे लेफ्ट हैंड साइड जाए, इससे राइट हैंड साइड जाए, जैसे जैसे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता या घटता जाएगा बॉन्ड ऑर्डर में 0.5 लेवल का डिफरेंस आएगा। यहां से आगे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में बढ़ता जाएगा, यहां से पीछे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में घटता जाएगा, यहां से आगे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग में बढ़ता जाएगा, यहां से पीछे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में घटता जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज इन एंटी बॉन्डिंग and due to that bond order will decrease. Number of electron will decrease in antibonding and due to that bond order will decrease. So these will have 2.5, these will have 2, these will have 1.5. Have I done something wrong? Okay, I have done. In fact, I need to reach up to 19 and 20. That's what I got confused. Okay. Here it will be 1, here it will be 0.5 and here it will be 0. Now come to this side. Due to increase in antibonding, bond order drop. Due to decrease in antibonding, bond order will drop. And over here it will be 2.5. Over here it will be 2. Over here it will be 1.5 and over here it will be 1. Of course you can go even below that. You can go 9, you can go 8 also. And in that case it will be what? It is going to be 0.5 and it is going to be 0. Check it. बहुत ही सिंपल आपको शॉर्टकट दे दिया, चेक करो। आपको सेंटर पर फोकस करना है, यहां पर, यहां पर। ये मान के चलो कि ये नाइट्रोजन है, याद रखना भी बहुत आसान है, हमें पता है कि देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड, राइट। तो नाइट्रोजन में क्या है, नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 3 बॉन्ड है। उससे ऊपर जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर विथ 1 इलेक्ट्रॉन एडेड 0.5 डिक्रीज होगा। उसके नीचे जाएंगे तो विथ 1 इलेक्ट्रॉन डिक्रीज बॉन्ड ऑर्डर भी 0.5 डिक्रीज होगा। कैसा लगा ये शॉर्टकट, आप मुझे बताओ। अगर आपको कोई रैंडमली दे दी कि भाई O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर माने हाफ NB माइनस NA करना पड़ेगा। बताओ क्या करना पड़ेगा, हाफ NB माने आपको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स गिनने पड़ेंगे, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स गिनने पड़ेंगे, कुछ नहीं करना है। चेक करो क्या है,
टोटल 8 2 जा 16 प्लस 1 चार्ज है तो -1, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 15 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 15 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बॉन्ड ऑर्डर इज 2.5। बोलो, मान लो कि वो जो स्पीसीज हमने सॉल्व ही नहीं किया उसके ऊपर काम करो। चलो C2 प्लस में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? ऐसा आई रफली C2 प्लस में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बताओ? तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स, 12 माइनस 1 इक्वल्स टू 13 इलेक्ट्रॉन्स। 13 कहां पड़ता है? देखो 13 यहां, सॉरी 11 नॉट 13, 11 कहां पड़ता है? 11 यहां पड़ता है, 11 यहां पड़ता है, तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.5। चेक इट। अब बताओ, आप बताओ मुझे कि B2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? B2 माइनस। अब ऐसी कोई भी अतरंगी स्पीसीज आपको दे सकते हैं स्टूडेंट्स, कोई भी स्पीसीज जो एग्जिस्ट ना भी करती हो तो भी आपको पूछ ले, ऐसा हो सकता है। B2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? B2 माइनस। अब देखो बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, B2 माने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10, 10 माइनस 1 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 11 इलेक्ट्रॉन्स। 11 इलेक्ट्रॉन्स यहां पड़ते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1.5। अब देखो ऐसी कोई स्पीसीज आपने कभी देखी ना हो, O2+3 का बॉन्ड ऑर्डर आपको पूछ ले, कैसे करेंगे? अब O2+3 जैसा कुछ होता ही नहीं है स्टूडेंट्स, O2+3 जैसा कुछ होता ही नहीं है, फिर भी आपको बॉन्ड ऑर्डर पूछ ले तो कैसे सॉल्व करेंगे? O2 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें? 16 प्लस 3 माने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देने तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 13, और 13 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो कहां पड़ेगा? 13 इलेक्ट्रॉन्स है तो यहां पड़ेगा, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5। अरे यार बहुत सेंसिटिव है, 2.5। क्या सब लोगों को ये समझ में आ रहा है? लेट मी नो स्टूडेंट्स। शॉर्टकट मैंने दे दिया आप लोगों को। क्लियर है सब लोगों को? अच्छा, तो जैसा मैंने आपको बॉन्ड ऑर्डर का शॉर्टकट दिया, आपको क्या चाहिए? एक और चीज भी चाहिए, एंड दैट इज व्हाट यू नो, दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का भी शॉर्टकट मैं आपको दे सकता हूं। अब समझे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए कंपलसरी आपको क्या चाहिए? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए कंपलसरी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन चाहिए ही चाहिए। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए आपको क्या चाहिए? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए आपको कंपलसरी क्या चाहिए? आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बनानी ही पड़ेगी, तो ही आप जाकर के देखेंगे कि किसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है। जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो पैरामैग्नेटिक होगा, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो, सॉरी, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स पेड है वो डायमैग्नेटिक होगा। लेकिन मैं आपके लिए इसकी भी शॉर्टकट दे देता हूं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो। all the electrons are paired, तो क्या होगा? डायमैग्नेटिक। ठीक, वन और मोर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स तो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, माने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोला, अनपेड की भी बात नहीं कर रहा हूं, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर ऑड है, ऑड, मान लो कि कोई स्पीसीज के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, क्या आप किसी भी तरह ये 5 इलेक्ट्रॉन को पेयर कर सकते हैं? किसी भी सूरत में 5 इलेक्ट्रॉन को 7 इलेक्ट्रॉन, 9, 11, 13, 15, 17, 1, 3, ये ऑड नंबर को आप कभी भी पैड नहीं कर सकते। सो जब भी कभी ऑड इलेक्ट्रॉन्स आ जाए स्टूडेंट्स, सुनना ध्यान से, जब भी कभी ऑड इलेक्ट्रॉन्स आ जाए समझ लेना कि वो पैरा होगा। इसमें 2 और एक्सेप्शन जोड़ लेते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। टोटल
number of electrons if odd and 10,16 पैरा। बस एक सेंटेंस में सब कुछ आ गया। बस एक ये सेंटेंस लिख लो, याद कर लो, आपकी जिंदगी बन जाएगी। चेक कर लो इसे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाए? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो। अगर वो नंबर ऑड आता है, या तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 या तो 16 आते हैं, तो वो पैरा होगा। अदरवाइज सारे केसेस में आपको डाया कर देना है। जैसे कि मैं यहां पर आपको दे दूं O2 माइनस। अब इसे देखते ही आपको समझ जाना चाहिए कि टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें एक ऐड हो रहा है, तो ये हो गया 17। ये ऑड इलेक्ट्रॉन है, इट्स बाउंड टू बी पैरामैग्नेटिक। इट इज बाउंड टू बी पैरामैग्नेटिक। अब देख लो कि नाइट्रोजन है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन्स है। 14 इलेक्ट्रॉन्स आर इवन इलेक्ट्रॉन्स। इवन इलेक्ट्रॉन्स है तो ये पैरामैग्नेटिक है, ये डायामैग्नेटिक है। लेकिन यहां मैं कर दो N2 माइनस 2। N2 माइनस 2 चेक करो। N2 माइनस 2 में 14 इलेक्ट्रॉन्स, माइनस 2 माने टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स। 16 इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग हियर एंड इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। देख लो स्टूडेंट्स। अगर मैं यहां पर आपको दे दूं B2 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5 into 2 10 इलेक्ट्रॉन्स है। 10 इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग हियर एंड ड्यू टू दैट रीजन इट इज व्हाट? इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। थोड़े बैक जाओ, अपनी नोटबुक में चेक कर लो। B2 पैरामैग्नेटिक होगा, N2 माइनस 2 भी पैरामैग्नेटिक होगा। देखो स्टूडेंट्स, अगर आपके सामने मैं डाल दूं C2 प्लस 2 क्या होगा? टोटल C2 में 12 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 माने कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। अगर आपके सामने मैं डाल दूं O2 प्लस 2, चेक करो स्टूडेंट्स, O2 प्लस 2, O2 में कुल मिलाकर 16 प्लस 2 माने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देने माने 14। सो 14 यहाँ बिलोंग नहीं करता है, इवन इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक। एकदम शॉर्टकट मैंने आपको सिखा दिया है। कभी कभी पूछ लेते कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायामैग्नेटिक, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरामैग्नेटिक, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अट्रैक्शन होगा माने पैरामैग्नेटिक, रिपल्सन होगा माने डायामैग्नेटिक। तो मैंने आपको बॉन्ड ऑर्डर और पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक का बहुत ही सिंपल शॉर्टकट बता दिया है। ये पूरे 2 पीरियड्स जो हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी डिस्कस की है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन यही है कि नीचे दिए गए के बॉन्ड ऑर्डर बताओ, नीचे दिए गए की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताओ। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे चेक करना है? बॉन्ड ऑर्डर के लिए आपको रेफरेंस ले लेना है 14 माने क्या? टोटल बॉन्ड ऑर्डर विल बी 3। 14 से एक इलेक्ट्रॉन ऊपर गए तो 0.5 कट करते जाओ, एक इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हुए तो भी 0.5 कट करते जाओ। दूसरी बात, अगर आपके स्पीशीज में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर ऑड है, या तो 10 है या तो 16 है, तो वो हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। इन ऑल अदर केसेस इट इज गोइंग टू बी डायामैग्नेटिक। ठीक है। आज की क्लास आपको कैसी लगी वो मुझे चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, या तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप इनबॉक्स में जरूर शेयर करें। आई हैव ट्राइड टू सिंप्लीफाई इट एज मच एज इट कैन बी पॉसिबल। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो कीप लर्निंग, एंजॉय केमिस्ट्री। जय हिंद।